गुड मॉर्निंग मैम, मीना मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैम पीपीटी शेयर हो रही है ना? हाँ दिख रहा है। सुमन्ना बेटा आपका कैमरा नहीं है, आप किससे ज्वाइन कर रहे हो? हाँ, मैं I'll just attach my camera. Yeah. विवान, यक्ष और हाँ मोक्ष का, विवान और यक्ष त्रिवेदी बेटा आपका वीडियो, चलो सारे बच्चे वीडियो ऑन कर लो, टाइम हो गया ऑलमोस्ट। विवान आप भी बेटा। यस मैम। यक्ष, हाँ किधर है यक्ष, मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? हाँ मैंने किया ऑन। हाँ बेटा आप लोगों ने जूम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया। मोक्ष डायरेक्ट क्लास में आया, बट आप लोग डायरेक्ट क्लास में नहीं आए। ये जूम रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस करना था, याद है ना आपको, जो श्रुति मैडम ने वीडियो में प्ले किया था वो। अभी देखो आप लोग डायरेक्ट क्लास में आ नहीं सकते हो, मुझे आपको एंट्री करना पड़ा। आपको जूम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करो। हाँ देखो अथर्व अरोरा भी डायरेक्ट आ गया, इन लोग ने किया है लास्ट ईयर। ये मोक्ष, ये अथर्व हमारे ओल्ड स्टूडेंट है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। आप लोग भी करो। हाँ फिर ऐसे फिर आप लोग बाहर रहोगे वेटिंग रूम में। कम ऑन एवरीवन। अथर्व गुड मॉर्निंग। उठ गए बेटा? जी मैम। चलो वीडियो ऑन करो, सारे ऑन करो। टीचर ऑलरेडी रेडी है, 1 मिनट में आप लेक्चर स्टार्ट होने को। ये कौन है? रणवीर। रणवीर। स्टूडेंट्स प्लीज अपने स्टूडेंट नेम से रीनेम करो अगर आप अपने पेरेंट्स के इससे लॉगिन कर रहे हो तो, बिकॉज मुझे स्टूडेंट का नाम चाहिए। रणवीर आप स्टूडेंट हो? रणवीर, आपका नाम रणवीर है? हाँ मैम। आप कौन से ब्रांच से हो रणवीर? ऐरोली। आयरोली। हाँ दिकाजिंग क्या, ओके आई गॉट इट। आयन वरेकर। रोहन एस। रोहन एस कहाँ से हो बेटा आप, कौन से ब्रांच से हो? हाँ रोहन सोनावन है राइट? रोहन म्यूट करो, वीडियो चालू करो सब लोग। रणवीर आप भी। हाँ मैम 1 मिनट। रोहन
उसको शायद आवाज नहीं आ रही होगी। अर्पिता Yes, ma'am. वीडियो चालू करो। अर्पिता का Yes, नाम ma'am. है। वीडियो कंपलसरी है बेटा, प्लीज ये नोट करके रखना। Just a minute. अद्वे, अद्वे कहाँ का है? हाँ, अद्वे, अद्वे का नाम नहीं। अद्वे आप कौन से ब्रांच हो बेटा? कहाँ गए? अद्वे आप कौन से ब्रांच से हो? प्लीज व्हेन आई एम आस्किंग समथिंग प्लीज आंसर। आपको अनम्यूट करके बात करनी है। हाँ, आप कौन से ब्रांच से हो बेटा? मैम नेहरू ब्रांच। अच्छा, आप का नाम नहीं दिख रहा है अटेंडेंस में। ठीक है, मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा क्योंकि चक्रवर्ती, कम ऑन स्टूडेंट्स, एवरीवन प्लीज ऑन योर वीडियो। हाँ, आपकी वीडियो स्टार्ट करो। सुमेध, अद्वे, निखिल, नैना चोपड़ा, जो भी हो आप लोग, प्लीज यू हैव टू कीप योर वीडियो ऑन। Ma'am, 1 minute. या मैंने 15 मिनट पहले से क्लास ओपन रखा है। आज ये फर्स्ट डे है तो इट्स ओके, बट आगे से आप लोग पहले ज्वाइन करके सब सेटिंग करके रेडी रहने का, ठीक है? ये 1 मिनट वाला काम बाद में नहीं करने का। ईशान, गुड मॉर्निंग बेटा। ईशान, वीडियो ऑन चालू करो आपका। रणवीर, प्लीज स्टूडेंट्स में सबका नाम नहीं लूंगी, ये डिसिप्लिन रखो। आपकी वीडियो आपको ऑन रखनी है, ठीक है? सारे बच्चे। दिशा, आपको भी करना है। अर्णव, अनिकेत, अलग से बोलो बेटा। हाँ, अपने बच्चे आ गए सारे। दिशा जादव, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये विवान चक्रवर्ती, आपका, हाँ, रोहन सुना। हाँ, ये इनका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा।
स्टूडेंट्स आप लोग बुक पेन लेके रेडी हो ना? हाँ मैम. आपने आपका Yes, नोटबुक ma'am. पेन सब लिया है ना? हाँ। हाँ एक पानी का बोतल भी सामने रखो सो दैट आपको उठना बैठना ना पड़े. मम्मी या पापा को बोल दे पानी का बोतल या ग्लास लाके रख दे. निखिल आपका वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे हो बेटा? मैम 1 मिनट आया. हाँ. सुमेध कोई दिक्कत? आपकी वीडियो ऑन नहीं हो रही है? सुमेध सुमेध मेरी आवाज आ रही है आपको? मैम जस्ट टर्निंग ऑन. हाँ आपको अपना वीडियो ऑन रखना है. हाँ शेखर सन्मित्रा आप कौन से ब्रांच से हो बेटा? हाँ नहीं. हाँ सन्मित्रा शेखर आपको यस मैम. खारगर. खारगर ये आप ही का नाम है. आप लोग प्लीज स्टूडेंट अपना रीनेम करो प्रॉपरली. आपके नाम से स्टूडेंट के नाम से रीनेम यस करो. मैम सन्मित्रा मेरा ही नाम. अच्छा दिशा आपका वीडियो क्यों नहीं ऑन हो रहा है बेटा? आपको आवाज आ रही है? दिशा जादव एम आई ऑडिबल? दिशा दिशा आप हो क्या? Yes, ma'am. हाँ आपका वीडियो ऑन रखने का. हाँ Yes, ma'am. Good morning, Meena. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. उदय सर दिख क्यों नहीं रहे? हाँ मीना, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. उदय सर भी आपको बोल रहे थे. उदय सर आप मुझे दिख क्यों नहीं रहे हो? मैम एक्चुअली एक ही कैमरा चालू है बोर्ड वाला. अच्छा एक मिनट में जरा विकास से बात करती हूँ. नहीं एक्चुअली गुड मॉर्निंग उदय सर. स्क्रीन शेयर किया ना, हाँ वो कैमरा बंद करना पड़ेगा. अच्छा गुड मॉर्निंग उदय सर. मॉर्निंग सर. चलिए, आई थिंक बस मैं ये क्लास को इंट्रोड्यूस करने के लिए आया था. Students, very good morning for this first class of RMO. So just wanted to let you know that you guys have performed brilliantly in the first screener test. Iski wajah se you are in the class. So, you know,
Uday sir would be first doing this course with you guys, and just wanted to let you know the approach in this course would be slightly different, in the sense that when you do board coaching or school coaching, it's more of textual course where we teach you a very set syllabus जो आपको मालूम है, you are aware of it, and वही चीज पूछी जाती है. Here what would happen is it would not be a linear approach. It would be a non-linear approach where we'll probably teach you slightly differently. So the first part of this course is where for the first 6 weeks, you will undergo a sample of this is how the training would be. Then we would again have an exam in the month of June, which would decide whether you want to continue forward or not. So enjoy the course and keep giving your feedbacks to us. And we'll keep meeting you every Sunday morning, 8 to 9:30. This course will always be online. Uday sir, that's all from my side, the introduction. Please get started, sir. Thank you very much, sir. So मीना मैम स्टार्ट कर सकते हैं या वेट करना है? हाँ जी कीजिए सर. आई गेस ऑलमोस्ट सारे बच्चे आ रहे हैं. जो लेट आएंगे मैं उनको अंदर लेती रहूंगी सर. आप स्टार्ट कर सकते हैं. इट्स ऑलमोस्ट 8:14. So very good morning to all. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, I'll start with you. Can anyone tell what is PRMO actually, or RMO, or IMO? Any idea about this? Sir, Regional Maths Olympiad. Okay, Math Olympiad. Okay, Atharv, Arora? No idea. Since regional maths. Okay, Aratrika, do you have any idea about that PRMO or IMO? So it will help us for if we try for IIT. It's Okay. Advay? Any idea about this course? Your voice is low actually. It would be same for me, that it would be helpful for me in IIT. Okay. Will be helpful for you in IITs. Okay. Vivan Chakravarti. Sir, it's an exam which helps you in your future. Okay. Saina Chopra. It's the Maths Olympiad. Okay. Moksh. Sir, no idea. No idea. Okay. Disha. You heard about actually Math Olympiad. Okay. I think everyone is aware of that Math Olympiad. It's an international competition, okay, of mathematics. So actually, everyone cannot give the exam of IM. So from the every country, some students are selected, okay. Then they are eligible for the IM, okay. So actually, from India, 6 students are selected for this IMO test, and they wrote the test. Okay, so for the selection of that 6 students, so we have different stages of exam. Okay, so its first stage start with the PRM. Okay, it's not RM actually, it's PRM, pre-regional mathematical Olympiad. Okay, so everyone from the class of 8th to 12th, okay, can give this exam. Okay, we will discuss the stages, okay, in the upcoming slide. So first stage is pre-regional mathematical Olympiad. Okay, so it comprises of the syllabus of class 8th, 9th, 10th, or some part of 11th and 12th. Okay, so there is no differentiation in the exam. So there will be a single exam for the this PRMO for class 8th, also from 9th, 10th, in 11th and 12th. Okay, so if you are in 10th or you want to give this exam, so you should be aware of the pattern or a syllabus of the class 11 and 12. Okay, not complete syllabus, some part is there.
Okay, that is defined by that body, conducting body. Okay, so that topic you have to study for this exam. Okay, clear? So we start the discussion how this exam is conducted and what are the stages to qualify. What are the stages of this exam and how what should be the strategy for the preparation of this exam. Okay, so in between, if you have any doubt, you can ask, or बाद में भी at the last of this session we will have a discussion or a doubt session and Q&A session. Okay, so we'll start with the first. So I hope screen visible है सबको, share हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So actually it's as I told, it has 6 stages. Okay, so first stage is pre-regional mathematical Olympiad. Okay, so in this actually there will be a 30 question you have to solve in the 3 hours. Okay, so you will get a 3 hours to solve this paper, and there will be a 30 questions. Okay, they are not MCQs type, but you have to put the answer in single digit or 2 digits. Okay, so let's say you got an answer of 12. Okay, so you have to fill the circle of 1 and 2. Okay, in your OMRs. So it will be totally offline. Okay, so after this PRMO, okay, as you qualify this exam, you will be eligible for your RMO test. That is Regional Mathematical Olympiad. Okay, so first was a speaking test. Second is also a screening test. Okay, so everyone from class 8 to class 12 can give this exam. Okay, we'll discuss the stage-wise exam. So first is PRMO test. Okay, and second is this RMO test, that is Regional Mathematical Olympiad. Okay, so as if I talk about the numbers of students, so after the first stage, okay, the number of students, that is around 14,000 who are eligible for the RMO test. Okay, so first after the first stage, 14,000 students will be eligible for the second attempt. Okay, and the third comes to be INMO, or we can say INMO, Indian National Mathematical Olympiad. Okay, Sir, so yes, the slides are not visible. this for everyone or for Moksha only? So did Sir, you it's change the just showing slide? first slide. Sir, the slide is visible. It's just like the first slide. Pardon, Vivan? Sir, the पहली slide ही दिख रही है sir. सिर्फ आगे की नहीं दिख रही. पहली दिख रही है अभी? पहली ही दिख रही है sir. वो next slide नहीं दिख. Okay. नेक्स्ट स्लाइड किया ही नहीं है बेटा विवान, अभी सर ने स्लाइड किया ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ वो फर्स्ट पेज ही रखा है। मोक्ष, आपको दिखने में दिक्कत हो रही है? नहीं मैम, मुझे भी वही डाउट था कि स्लाइड नहीं नहीं नहीं, सर ने अभी तक स्लाइड ऊपर नीचे कुछ किया ही नहीं है अभी तक। सर आपने कुछ किया नहीं ना अभी तक? हाँ मैम, क्या आई मीन थर्ड स्लाइड एक्चुअली नहीं सर, स्लाइड नहीं आ रहा है। अच्छा, नहीं आ रही, जस्ट हाँ नहीं आ रहा है। हाँ फिर से शेयर कर। अनवी, आर यू यूजिंग 2 डिवाइस? प्लीज, मैं चैट मैसेज में कुछ करूँ लिखूंगी तो आप लोग को रिप्लाई देना है। अनवी, मैंने आपको कुछ मैसेज भेजा है, आप जरा रिप्लाई करो मुझे। No, ma'am. मोक्ष अभी हो रहे हैं? मोक्ष नहीं सर, फर्स्ट स्लाइड ही है। अभी भी फर्स्ट है? हाँ अभी मूव हो रही है? Yes यस sir. सर। ओके ओके, अभी ठीक है मोक्ष? यस सर।
So as I told you, for first stage, right? So after the first stage, 14,000 students selected for the RMO. Okay, so they will write the RMO test. Okay, so after the RMO test, okay, so as I told you, INMO test, those who have qualified for the who qualified the RMO test will be eligible for INMO test. Okay, after that INMO test, that is third, fourth stage comes International Mathematical Olympiad. Okay, for this actually 35 students is selected from across all the India. Okay, so only 35 select in IMO TC. Okay, for IMO TC. After that, first stage comes, that is pre-departure camp. Okay, so for that only 6. Okay, so that 6 will be the final student that will represent India in IMO. So these are the stages. Okay, first I told you PRMO. Okay, after PRMO, 14,000 students is selected. Okay, for RMO test, who wrote the RMO test? Okay, out of that 1,400 students is selected. Out of that, INMO or only who wrote INMO is eligible, only 35 students is eligible. Okay, for that pre-departure. Okay, clear? So 14,000 to 1,400. Okay, then 1,400 to directly 35, and out of 35, only 6 students will represent India in the case in I. Okay. So actually, due to COVID, last year, that pre-IMO, RMO and RMO, okay, they have clubbed both the exam, okay, and take only single exam for that. Okay, so that is actually IOQM, okay, the Indian Olympiad qualified in mathematics. So if we talk about the eligibility of the test for PRMO, okay, so every student, as I told you, from the class of 8th to 12th. That slide did not change again. Again, not change. No, sir. Still on the second slide. Okay, wait a minute. Go. So now Yes, sir. change. Now it has changed. Change. Yes, sir. Okay. अभी ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so from class 8 to 12th. So every student can give the exam of that PR. Okay, so age criteria is around 19 to 20 years. Okay. I think अभी भी change नहीं हुई होगी slide. No, sir. No, sir. Wait a minute. PDF. उदय सर, आप लैपटॉप यूज कर रहे हो क्या? नहीं मैम, अच्छा, संकेत आ गया है, वो आपको हेल्प करेगा. आपकी स्लाइड चेंज नहीं हो रही है ना, तो वो शायद अभी एक्सेस लेके ही हेल्प यू सर. अभी ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. So if we talk about the seats in RMO, PRMO actually, okay. So actually that council has divided the complete area in India into 25 regions, okay. So if we talk about the Maharashtra, so we have 2 regions in Maharashtra. One is Mumbai and second is Maharashtra and Goa, okay. So for each region, 300 students are selected, okay, from class 8 to class 11. Okay, first 12th 60 seats are reserved for class 12. Okay, and out of that actually 5% and 1% is for that
Navodaya Vidyalaya and Kendriya Vidyalaya. They are reserved for their students, them. But the paper is same for, as I told you, is same for each classes, whether you are in 8th class, 9th class, 10th, 11th or 12th. Okay, so you are going to give the same exam, or a paper will be same for all these students. So if we calculate the around 9,000 seats will come. Okay, so in that actually they have screened 14,000. They will screen 14,000 students. Okay, including that Navodaya Vidyalaya and Kendriya Vidyalaya. As I told you, after the PRMO, 14,000 students will be eligible for that RMO test. Okay. Next, the pattern of the exam, it will be for PRMO, that will be number of questions will be 30, or duration will be 3 hours. Okay, so it will be single or double digit integers. As I told you, if you get the answer as 12, so you have to put the darken the circle, okay, of first and second. Okay, if you got, let's say 0 or 2, so you have to circle the 0 and 2. Okay, 0 and 2. So in this case, there will be no negative marking. Okay, so you can attempt as many questions. You can attempt all the questions in the exam. So types of questions, there will be some short questions, long question, and very long questions. So on an average, 6 short questions will be in number of 6. Okay, so marks will be per question is 2. So it will be around, it comes to be 12 marks. So 12 marks short questions, long questions will be 15. Okay, so each of 3 marks. So it will comes to be 45. Okay, again for very long also 9 question and 5 marks each. So it will be 45. So total will be total number of question will be 30, and the total marks will be 10. Okay. So actually the cutoff marks will be declared on the basis of region wise. Okay, so I'll discuss that also. The cutoff marks will be very less actually. It will be around 18 to 20 marks. If you score 18 or 20 marks, you will be eligible for that RMO test. Okay. So if we talk about the syllabus, so all the syllabus that from class 8th to class 12th. Okay, as I told you, for class 11th to 12th, we have some topics. Okay, 3 to 4 topics are there from the class 12th, 11th and 12th. Mostly are from 9th, 8th, 9th and 10th. Okay, so difficulty level, if we talk about the difficulty level, it will be the increases from PRMO to that IMO test. Okay, so if we, as I told you, the number of questions for the PRMO will be 30, and you will give 3 hours to attempt that question. Okay, but in the case of RMO, we talk about the RMO, so you will give only 6 questions. That pattern of the paper will be totally subjective. Okay, for RMO, pattern will be subjective, and you have to attempt 6 questions out of 3 hours. Okay, so they will give you 3 hours for attempting these 6 questions. They are totally subjective, so you have to write the answers for that. Okay, in that also you will get the step markings. So by this you can imagine the difficulty level of the questions. You have to attempt only 6 questions in 3 hours. Okay, so syllabus includes basic geometry, quadratic equations, arithmetic integers, number theory, graph theory, trigonometry, permutation and combinations. Okay, so mostly are from class 9th and 10th. Okay, and some are from your class 8th. Okay, so what will be the strategy for preparation? Okay, what we are going to follow for this for the preparation of PRMO. So first level is actually NCERT. Okay, NCERT was from ICSE, or they can refer their book also. So actually
in the level 1 we prepare the clear our concept actually. Okay, so we discuss the basic concepts of your classes, 8th class, 9th class and 10th class. Okay, along with that you have to do one book. Okay, not RD Sharma, you can refer any book, okay, other than RD Sharma also. Okay, so what I'm saying actually, you have to do the practice of NCERT plus you have to do practice for at least one book for this preparation. Okay, so you have to give the time for the practice of questions from the other book also. But NCERT, that means basics of 8th, 9th classes must. You should be clear about your basic concept of all the topics. Okay, so that we can go. Actually, क्या होगा problem क्या होगी यहाँ पे directly they are not going to ask find the roots of the quadratic equation and or a polynomial. Okay, they will ask from your basic concept, but you have to apply the concept in a different manner. ठीक है, directly नहीं आएगा, आपको उसमें सोच think करना पड़ेगा. The questions are basically from puzzle type. Okay, you cannot in a position to directly apply the formula and get the answers. There will be some twist in the question जहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, उस question को judge करना पड़ेगा. ठीक है, we will discuss that also, its strategy and all these things. So this is the basic strategy, or we can not level 1, we can say level 0. Okay, for clear our concept and all this. As some students are from class 9, they don't aware of the syllabus of the class 10, so we cover that topic. Okay, for class 9, class 10 we cover up. Okay, so first is NCERT or your basic textbooks of class 8th and 9th and 10th, and plus RD Sharma or any book that you can refer any book. Okay. So if we talk about the class 11 syllabus, so mostly we have 5 topics from class 11. Okay, first is trigonometry. इसका अगर बेसिक की बात करूं कि already studied, you will study in class 10. ठीक है, upcoming classes में जो होंगे हम लोग trigonometry को complete करेंगे. Sequence and series, one series in there in your syllabus, that is arithmetical progression in class 10th. Okay. Then set theory, functions and PNC, permutation and combination. That is very important topic, permutation and combination. Okay, so these are the topics from class 10th, 9th, 11th. Okay, बाकी आपके जो होंगे वो 9th, 10th, 8th के सिलेबस में है. ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा जो प्रैक्टिस करना है, that is only 5 topics: trigonometry, sequence series, set theory, functions, permutation and combination. Sequence series में भी almost one series already complete कर लोगे. That is arithmetic progressions. Okay. So if we talk about the third level, okay, जहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा स्टडी को क्या करना पड़ेगा, एडवांस करना पड़ेगा. ठीक है, बियॉन्ड योर बोर्ड सिलेबस हम लोग स्टडी को क्या करेंगे, थोड़ा सा एडवांस करेंगे. उसके लिए हमें कुछ बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी. ओके, दैट एक्चुअली वी आई विल रेफर दैट. ओके, आपको परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. हम लोग असाइनमेंट्स जो करेंगे they will be from these books only. Okay, so one is Challenge and Thrill of Pre-College Mathematics, okay, by V. Krishnamurthy, and Mathematical Circles है Russian writer की. ठीक है, so we mostly इन्हीं 2 books को follow करने वाले. But most important is previous year RMO papers. Okay, that is very important. ठीक है, if you want to judge your preparation level, ठीक है, तो आपको PYQ में जानी पड़ेगा. Even for board, if we talk about the boards also, अगर आप पढ़ भी रहे हो तो जब तक हम लोग PYQ नहीं लगा रहे हो, जब तक उससे आपको अपने प्रिपरेशन का लेवल अगर जज करना है, ठीक है, तो PYQ is must, previous year questions is must. So in the same way यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई करेंगे कि आपको क्या करना है, PRMO के जितने भी previous year papers, ठीक है, वो हम लोगों को क्या करना है, स्टडी करना है. ठीक है, even though हम लोग we are preparing for PRMO, बट हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे आरएमओ पे. ठीक है, एक लेवल अप करेंगे ताकि वी कैन इजीली क्रॉस द पीआरएम. गॉट इट? नेक्स्ट लेवल पे हम लोग क्या करेंगे, आईएमओ और एपीएमओ एंड ईजीएमओ के क्वेश्चंस भी कंप्लीट करने वाले. ठीक है, आईएमओ आई थिंक इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, एंड IMO की तरह क्या है, APMO, that is specific
specifically for Asian Pacific regions countries. Okay, that is not worldwide, that is for Asian Pacific countries only. Similarly, for girls also, one European Girls Mathematical Olympiad is also there. Okay, so that from the questions of these two, APMO, EZMO, and also from IMO, we also cover that questions also. Okay, so these are the 4 levels that we are going to cover. Okay, or we direct our study in the upcoming classes. Okay, we will start with the NCERT, then go to the that advanced level, that is class 11. Okay, then we'll go to some extra books or PYQs, and then we'll go to the IMO questions. Okay, as I told you, cutoff is very less. Okay, for class 8 to 11, if I talk about the 2019 cutoffs. So actually cutoff is decided according to the region. Okay, so as I told you, 300 students is selected from the East region. So in 2019, the cutoff was 11 for class 8 to 11. Okay, so out of 102, okay, पेपर कितना 102 का था, उसमें से जो कट ऑफ था that was 11 marks only. For 12th it was 18 marks. Okay, so no need to go with all the questions. ठीक है, तो आपको selective questions ही करना है in 3 hours, और उससे आपको क्या करना है, स्कोर करना है. ठीक है, this is for Mumbai. In Maharashtra, for 8 to 12th 11th it was 13, and for 12th it was 25. Okay, so if we talk about the conducting body who conduct this exam, so actually MAT is there, that is Mathematical Teachers Association. Okay, वो conduct करेगा. If we talk about the IITs, IIT JEE कौन conduct कराता है, that is NTA, National Testing Agency. तो यहाँ पे कौन करेगा, हमारे पास MAT टेस्ट करेगा, Mathematical Teachers Association. Okay, clear? और मैंने बोला था कि 4th 5th स्टेज में हम लोग कहाँ पे जाएंगे, कैंप में जाएंगे. कैंप में क्या होगा कि वहां पे आप लोगों को खुद से स्टडी नहीं करना है, वहां पे आपके टीचर्स होंगे कैंप में, वो आपको स्टडी कराएंगे. ठीक है, वो कहाँ पे स्टडी करना, दैट इज HBCS, दैट इज होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, दैट इज सिचुएटेड इन मुंबई. ओके, वहां पे क्या होगा, वो 35 स्टूडेंट्स जाएंगे वहां पे उनके सेंटर्स में. वहां पे क्या होगा, स्टडी करेंगे, और उनमें से फिर फाइनल एक टेस्ट होगा, और 6 student is selected. Okay, so that 6 student will represent India with tricolor in the IIM. Okay, so this was all about the orientation of our PRM. Okay, clear? ठीक है, तो अगर कोई questions हो तो you can ask one by one. Sir, about that cutoff, can you just repeat once again? Yeah. This is the cutoff. Cutoff is 11 for actually it is divided into 2 parts, for class 12 separately and class 8 to 11. Okay, so out of 102, as I told you, exam will be of 102 marks. Okay, 30 question, 102 marks. So cutoff will be 11. Okay, for 8th to class 11. Okay, and for 12th it is 18. ठीक है, तो अगर आप लोग तो अभी 12th में है नहीं, तो 18 के लोग बात ही नहीं करेंगे. We are focused on this 11. Okay, this is for Mumbai actually. For Maharashtra it will be 30. Okay, so if you score actually 20 to 30 marks in this, so you can easily qualify the exam. That is 100% sure. If you score 20 above 25, ठीक है, तो कितना भी easy paper होगा. Is it difficult to score above 25, or is it like just a average? Yeah, everyone. Is it difficult to score above 25? ठीक है ना, अभी कितना स्कोर करना हो दैट इज डिफरेंट थिंग. कट ऑफ की बात करते हैं ना अभी, मिनिमम की. ओके, Minimum 11 marks. Minimum 11 marks. Actually it will vary from exam that year to year. ठीक है, but it will be approximately 11. Okay, it can be 15 or 16 also.
ठीक है, वो डिफरेंट करेगा डिफिकल्टी लेवल का एग्जाम 2019 में लेवल किया। ओके, एनी अदर डाउट? Last year before COVID, India scored 23 rank in IMO. Okay. China was the first, US was the second. Okay. So, पूछना किसी को कुछ डाउट? नो डाउट? No, sir. ठीक है, हम लोग थोड़ा सा स्ट्रैटेजी पे वर्क करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद एक दो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोग जो अपना एक्चुअल प्रिपरेशन चालू करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, ओके, नेक्स्ट संडे वी विल स्टार्ट द सिलेबस, ओके। बोर्ड विजुअल है आप लोगों को? No, sir. So now it's visible. Okay, wait a minute. विजुअल ना, आप लोग स्विच कर रहे हैं कैमरा पे। तो स्ट्रैटेजी वाइज एक्चुअली हमारे पास दोनों स्टूडेंट है, क्लास 9th के भी, क्लास 10th के भी, और 10th का भी अगर मैं बात करूं तो अभी सिलेबस मोस्टली आई थिंक 1 to 2 चैप्टर्स ही कवर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 9th और 10th का क्लब करके सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो जैसे अगर मैं बात करूंगा पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल इज इन बोथ क्लासेस इवन इन 9th and 10th, ठीक है। तो वी कवर द डेप्थ ऑफ द कॉन्सेप्ट एक्चुअली, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट हम लोग पहले स्टार्टिंग में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करेंगे कि जस्ट थ्योरी कवर कर रहे हैं, विल गो विद द क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। कुछ टॉपिक्स हैं उसके क्वेश्चंस किए, फिर साथ में उसके क्वेश्चंस भी मींस फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, देन वी विल गो टू क्वेश्चंस, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग कवर करेंगे एनसीईआरटी, ओके, ठीक है। एनसीईआरटी लिख रहा हूं, दैट मींस टेक्स्ट बुक। कैमरा एंगल अलग है सर, ये साइड दिख रहा है, बोर्ड नहीं दिख रहा सर। So NCERT means your textbook. We will cover that textbook. ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट करना हम लोगों को, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर धीरे धीरे जाके हम लोग नेक्स्ट जाएंगे, अपने लेवल को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग 11th का सिलेबस करेंगे, देन विल गो टू दैट एडवांस बोर्ड, ओके, ठीक है। तो अभी मैं अगर मैं बात करूं 2019 का एक क्वेश्चन आया था, जस्ट आई वांट टू डिस्कस दैट क्वेश्चन, आप लोग ट्राई करो इसको, आपको समझ में आएंगे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। सो लेट्स आई एम हैविंग वन स्क्वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ, okay? I want to cut some areas from the corner of this square, okay, so that the final remaining area will be a regular octagon. Are you getting questions? We have one square is of length 5 centimeter, okay, and I want to cut some areas from the corners of this square so that I will get a regular octagon, okay. So what will be the area of the removed part, okay. So this is the first question of 2019 PR. Just try this question समझ में आया ना, किसी को डाउट नहीं है क्वेश्चन में? We have done one square of 5 centimeter. I want to cut some areas from the corners, okay, so that the remaining part will be a regular octagon, okay. Then find the removed area, okay, find the total removed area. I want a regular octagon.
किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो you can ask if you have any doubt in question. Aniket, your camera is off. I'll give you 2 more minutes. Sir, is it 15 centimeters square? Shine is saying 15 centimeter square. Okay. Any other answer? Now try. You want this area. I want a regular octagon. Any other answer? रोहन ट्राई कर रहे हो? रोहन सुनाओ ने. Are you trying? समझा नहीं. Sir, I am getting 12.5 centimeters square. Yes, so much say 12.5 centimeters square. I got answer from Saina and Sumit. So can I change it to 15.36? Actually, I rounded off. 15.3. 15.36 centimeters. Yes, sir. Any other answer? 1 second, still solving. Still solving. Sir. With this 15. अभी भी solve कर रहा हूँ. Not getting this telling the answer. Just take your name.
आप एग्जाम में आपको बहुत टाइम मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में. You have ample of time. So take your time and give me the answer. लेकिन ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई करो, ठीक है. दैट इज द अदर थिंग कि क्वेश्चन होगा नहीं होगा, एटलीस्ट लेकिन ट्राई करो, कुछ सोचो उसके बारे में. One got 6.25. It's not centimeter, it's centimeter square. Very long division is coming. Yeah, Nikhil. 4.3 centimeters. Point. 4.3 centimeters square. Okay. Aniket got 4.3 centimeters square. Yes, sir. 4.3. Okay. Any other answer? Or same answer भी आए तो बोलो. 2 got for 4.3 centimeters square. Actually, it is 4.28, sir. But 4.28. Okay, you got 4.28. round off करके 3 आया. Okay, ठीक है 4.3. क्योंकि आपको जो आंसर लिखना है वहां पे 2 डिजिट्स में डालना है, ठीक है. तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा. एक्चुअली इसमें ब्रैकेट्स में अप्रॉक्स दिए क्वेश्चन में. व्हाट विल बी द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ द एरिया रिमूव्ड बाय द फ्रॉम द स्क्वायर. ओके. यानी अदर आंसर, ठीक है. गलती हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आंसर बोलो कुछ भी. अगर सॉल्व करके आया आंसर तो रैंडमली नहीं. इफ यू गेट एनी आंसर. या मोक्ष क्या है आंसर? नहीं है. X got area of octagon as 21.0, so removed area will be 3.92. Okay. Any other answer? Any other answer? चलो एक हिंट देता हूँ. Let's say this is x. Okay, so x assume करो. So can I say this will be also x? This is also x. Yes, sir. Yes, for the
रेगुलर ऑक्टागन चाहिए, आई वांट रेगुलर ऑक्टागन, ठीक है, तो ये सिमिलर हो गया, ठीक है, ठीक, अभी ट्राई करो, अभी आंसर हो। यस सर, वैसे ही 4.3 है। हाँ ठीक है, बाकी लोगों को अगर स्ट्राइक नहीं कर रहा तो अभी ट्राई करो। So we have to find the area of these four triangles, okay? So for each triangle, area will be half of x square, base into height, perpendicular है. So for four triangles, it will be 2x square. So we have to find the value of x, I will get the area of removed part. Okay, if you have x value of x, you can easily find the area of the removed part. Okay, अभी try करो. सर एक ही ट्रायंगल का एरिया निकालना है कि सब ट्रायंगल का एक सर? तभी बोला ना, 4 times किया ना इसको, then only I will get 2x square. ओके सर. So is it 32? Okay, 32 centimeters square. Okay. Any other answer? 4.3 आया. Okay, so I got one more vote for. So can you repeat that 2x square once again? Actually, I got disconnected. Okay, okay. So actually this is x and this is x now. Yes, sir. Regular octagon चाहिए. So that's why it should be similar. So x and x. So area of one triangle will be half into base into height. Okay. Yes, so that it will be half into x square. Na? So we have 4 similar triangles. So area will be 4 times of this. So it will be 2x square. Okay. Okay, sir. Now I have to find the value of x. See, if I get the value of x, I will easily calculate the area of the removed part. So I got 12.48. Pardon? 12.48. 48. Okay, you got 12.4. Okay, so I'm putting this into this bracket. So for this also 2 volts. 12.4 or 5. Okay. So Arpita is also got 12.2. Okay. Any other answer? By 17.4. Nikhil got 17.4. Okay. Centimeters square. अथर्व ट्राई कर रहे हो अरोरा? Yes, sir. करो जल्दी. इसलिए टाइम दे रहे हो, एटलीस्ट आप लोग ट्राई करो, कुछ तो स्ट्राइक करेगा. Sir, 3.2 centimeters square. 3.2 Yes, sir. or 32. 3.2. 3.2. Okay, 3.2 centimeters. Okay.
Sir, 3.4 centimeters square. 3.4 centimeters square, and we got 3.4. So 12.5. Pardon? 12.5. 12.5. Yes, sir. One more for 12.5. So 4.3 centimeters square. 4.3 centimeters square. Okay. अभी कोई ट्राई कर रहा है सर? जो ट्राई कर रहा है अभी? Anyone want more time? No. अथर्व कर रहा है अभी. सर नहीं समझ रहा. अभी कोई ट्राई करना चाहता है कि चालू करें? रूट ऑफ 12.5. ओके, तो हमने आंसर चेंज किया है. ओके, 12.5 रूट. ठीक है, स्टार्ट विद साइना. साइना, आपने फर्स्ट आंसर दिया था. जस्ट टेल मी हाउ यू गॉट द 15.36. Sir, as octagon has equal sides, so 1.6 should be the, I mean, the approx. So half base into height, 1.5 into 1.6 into 1.6 into 4. That's what I did earlier in the start. How you got 1.6? So 5 divided by 3. 5 divided by 2? 3. By 3? It's not. Are they equal? Yes, sir, that is the mistake which I made. No, they are not equal. They are equal, x and x, but these three parts are not equal. Yes, sir, it will be 5 minus 2x. Yeah, Vivan. Yes, sir, that is why one side will be 5 minus 2x. Okay, so this will be 5 minus 2x. 2x. Okay, then clear. Okay, this is x, so this will be 5. Which implies that all the sides will be 5 minus 2x. Okay, so all these sides are 5 minus 2x. Then we can find value of x by using the hypotenuse formula, because we have to cut right triangles, because the angle is like the angle of root of x. But this is x, this angle is 90 degree, so I'll get root 2 of x. Okay, so this will be root 2x. Okay, अभी question complete हो गया. 5 minus 2x is equal to. So all sides are equal, so this should be equals to this. Okay, so that means root of 2x should be equals to 5 minus 2x. Okay, we'll take x here, 2x here, so it will be 2x plus 2x equals to 5. So x will be equals to, I'll take x as common, so it will be root 2 plus 2. So 5 upon root 2 plus 2. Okay, this is root 2. So I think I can take root 2 as common or rationalize the directly. So it will be root 2 minus 2 upon root 2 minus 2. So I will get 5 times of root 2 minus 2 upon this will be 2 minus 2 square. Now Minus 2 square. 2 minus 4. can I change my answer to 10 more? Okay, ठीक है, अभी हो गया 10 नहीं है. So this will be root 2 minus 4 is minus 3. Okay, sorry, minus 2. Root 2 square is 2 minus 4, so minus 2. ठीक है, यहाँ पे भी नेगेटिव आ रहा है 1.41 minus 2, तो प्लस हो जाएगा. ठीक है, तो ये आंसर था हमारे पास कैलकुलेट करके. कितना आंसर आया था इससे विवान? सर 1.6 के अराउंड आया था और into 4 करने के बाद 4.28 कुछ आया. बोर्ड ये ना बोर्ड. सर 1.4 एक ही डेसिमल तक देखा मैंने और फिर आगे कर दिया.
कितना आया? 1.4 तक कुछ 4 एक ही डेसिमल तक देखा, फिर मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर करके 2 टाइम्स करना, ठीक है, यू विल गेट द आंसर। तो अगर इसमें बात करूं मैं, तो कोई एक्स्ट्रा कोई कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अप्लाई किया क्या? Regular octagon has all the sides equal. ओके, ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन कितना इजी था, ठीक है, तो दैट पॉइंट एक्चुअली आपको स्ट्राइक करना चाहिए, वो पॉइंट उस टाइम पे, वो भी एग्जाम में, ठीक है। सो वी अप्लाई द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथागोरस एंड इक्वालिटी ऑफ द साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। Okay, so this is complete 5, so this will be x and x, so this will become pi minus 2x, ठीक है। यहाँ से अगर देखा तो this will be x and x, so I will apply the Pythagoras theorem, so I will get as this side as √2 of x, so that √2 of x would be equals to pi minus 2x, from there I will get the value of x, okay, so square करना है, 2 times करना है, you will get the answer, ठीक है, clear? तो 2 to 3 मार्क्स आपके यहीं पे स्कोर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है, कॉन्सेप्ट को डीपली एनालाइज करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला कि आपको ऐसा नहीं कि फॉर्मूला रट लिया और उसको अप्लाई कर, तो आपको खुद से कुछ एक्स्ट्रा सोच, क्वेश्चन सेम ही रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कुछ एक पॉइंट होगा जो आपको एक्स्ट्रा डिस्कस करना पड़ेगा, वहां पे है ना, डिस्कवर करना पड़ेगा वो चीजें, और वो आपने पॉइंट डिस्कस कर लिया, देन यू विल इजीली गेट द आंसर। छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, जैसे अगर लेट्स से हम सही कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, ओके, and they will say that the root of the quadratic equations are positive integers, okay, and find the square of the roots, or they say find the difference between the roots, clear? So let's say you got the answer as roots as 1.5 and 3, okay, 1/2 and 3, so they want a difference between the roots, so what will be the answer? ठीक है, 9th क्लास को समझ में नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट फॉर 10th क्लास में पूछ रहा हूं। 2.5 होगा, 2.5, 2.5, एनी अदर आंसर? डिफरेंस पूछा ना सर? हाँ, 2.5. the roots of the quadratic equations are given as integers, find the difference between the roots, ठीक है, आपने roots find किए 1/2 and 3, so what will be the answer of difference between the roots? 2.5. 2.5, any other answer? 2.5. 1? 2.5, same. 2.5, okay, any other answer? Any other answer? minus 2.5 होगा सर. Minus 2.5, okay. क्वेश्चन को मैंने 2 टाइम्स रिपीट किया है, ठीक है, तो भी आंसर्स गलत है। You got answer as 1.2 say 1.1/2 and 3. I'm again repeating the question. The given quadratic equation has integers roots. Find the difference between the roots. पर ये तो इंटीजर ही नहीं. Sir, 3. 3. So answer will be 3. आपने एक पॉइंट मिस आउट किया. The roots of the integer, the quadratic equations are integers. They find the difference between the roots. So this root will reject because it is given that the roots are integers only. Okay, तो आपको इसको कंसीडर करना है, समझा? Okay. अभी बताओ डिफरेंस बताओ. फिर भी 3 होगा ना सर? नहीं, इंटीजर की कंडीशन मैंने हटा दी. I remove the condition for integers as well. Then difference between the roots. -2.
2.5. Negative. Negative. Minus 2. Then any other answer? Minus 2.5. 2.5. Okay, someone saying 2.5. Any other answer? दो ही आंसर के अलावा कोई नहीं आ रहा, ठीक है, इतना तो आपको आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे मिस हो रहा है विवान। I ask for the difference between the roots. मैंने ऐसा बोला कि बिगर में, मैंने क्या ऐसा बोला इन दोनों के बीच में सबट्रैक्ट करना है। Okay, sir. समझ में आया. So actually difference is always represent bigger minus smaller. कि मैंने सबट्रैक्ट करने के लिए नहीं बोला था कि 1/2 से सबट्रैक्ट करो 3 से, ठीक है। कीप इन माइंड डिफरेंस इज ऑलवेज रिप्रेजेंट डिफरेंस बिगर माइनस स्मॉलर, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो आप लोग मिस करते थे, गॉट इट, ठीक है। तो आगे से कभी भी डिफरेंस पूछेगा किसी क्वेश्चन में, ठीक है, दैट मीन बिगर माइनस स्मॉलर, लार्जर माइनस स्मॉलर, गॉट इट, ठीक है। तो अभी आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि मेरे क्लास संडे टू संडे होना है तो बाकी डेज में आप फ्री हो, ठीक है। अगर आप सिंसियर हो, आपको करना है एग्जाम प्रिपेयर करना है उसके लिए, तो एटलीस्ट दिन में 15 to 20 मिनट्स, ठीक है, एटलीस्ट बोल रहा हूँ 20 मिनट्स आपको देना ही देना, ठीक है। एटलीस्ट 1 to 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है दिन में। तो अभी ये क्वेश्चन लिया, ठीक है, इसको आप पूरे दिन सोचो, नहीं आता तो शाम को सॉल्व, इवनिंग में आप सोल्यूशन देखो उसको, है ना। अभी ये मन में आ गया, कभी भी फ्री हो आप टाइम में सोचो कि उसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है, कहाँ पे मैं क्या मिस कर रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा है, क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, तो वैसे करके स्ट्रेटजी बनाना। तो ऐसा नहीं करना केवल कि संडे 8 to 9:30 क्लास हो रही है, ओके, उतना सफिशिएंट है, उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है, फिर नेक्स्ट संडे ही डायरेक्टली आ रहा है, ठीक है। तो वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इसमें टाइम भी बहुत कम है, ठीक है। मोस्टली जो एग्जाम होगा आपको सितंबर में होता है, अगस्त और सितंबर के बीच में होगा, ठीक है। इस साल भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। अभी हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग एडवांस में, तो आपकी तरफ से भी एफर्ट्स होने चाहिए, टीचर के बेस पे नहीं रहना कि सर आएंगे सर पढ़ाएंगे वो होगा सफिशिएंट। तो आपको अपने तरफ से क्वेश्चंस मैं दूंगा तो उसको सीरियसली सॉल्व करो, ठीक है। ये आपका एग्जाम नहीं बोर्ड का कि आप लास्ट में जाके पढ़ लोगे कि सम ऑफ रूट से भी ये होगा -b अपॉन a एंड जीरोस मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस विल बी c अपॉन a होगा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको एक प्रैक्टिस चाहिए, एक रिदम चाहिए, जो आपको कब आएगा जब प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक है। आज मैं उठ के अब करने लगूं क्वेश्चंस तो वो नहीं होने वाला है, ठीक है। इसमें भी आप लोग देखो मैंने दिया क्वेश्चंस तो मोस्टली लोगों को टाइम लगा लेकिन आ गया, ठीक है। तो वैसे उसमें भी होगा, टाइम दोगे देन ओनली यू आर इन अ पोजीशन टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। अभी किसी को डाउट वगैरह कुछ हो तो पूछ सकता है, तो सिलेबस से स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट संडे से। सर ने बोला कि 1 जून तक हम लोग क्या करने वाले हैं, मोस्टली 6 लेक्चर्स आपके होंगे, उसके बाद आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ओके। If you qualified the test, then only you will go for the further studies, okay, ठीक है। पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो बी रेडी, ठीक है, सिंसियर रहो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, उस एग्जाम को स्क्रीनर टेस्ट को क्वालिफाई करो, ठीक है, आगे की प्रिपरेशन करेंगे। क्लियर? कोई पूछना है कुछ और? एंड करें सेशन को? Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thanks.